Yes, Devangi, that one first is correct. B. Okay, we'll see for B. Yeah, I think C is correct. For B, we have to make the structure. What happened, others? Not getting any answers from you guys. Okay, guys, see here, please. So the shape is like this. So here we have what? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This will be 7 sigma bonds. C8, C2H4. So the two carbons will be bonded like this. This will be the shape of hydrogens. Okay, now you can see that the carbon is not having 4 bonds, so there will be a double bond here. Carbon will always have 4 bonds. So here we can see that 1, 2, 3, 4, 5 sigma and 1 pi, right? 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Now here, if you want to see, carbon and carbon are bonded. Each carbon has 1 hydrogen. Now this is, I am expecting these answers because like all of these formula are part of class 10. You must have learned about alkene, and alkyne. And what is the general formula for alkene? It is CnH2n plus 2. Alkene, it is CnH2n. And for alkyne, it is CnHn, right? So I expect these answers, not only me, like NCERT expect that you should know what are the structures of these molecules. Okay, simple organic molecules you should be knowing. So for here, you should have, this is sigma, and there is 1 sigma here. So there is 3 sigma and there is 2 pi. And these questions were also part of the homework that I gave you last class. यानी कि आप लोगों ने homework भी नहीं किया था फिर. Write a few more though. एक और लिख लीजिए आप. It's quite famous. The structure of benzene. The structure of benzene is all of these dots, they represent a carbon atom. Okay, so this will be carbon, carbon, carbons like this. Then there are alternate double bonds. Alternate double bonds, and each of these carbon, as you can see, that they are having 3 bonds now. This carbon also 3, this 3, this 3. Everyone has 3 bonds. That means the 4th bond will be with hydrogen. And in the bond line structure, we don't show hydrogen. So here you can see that how many sigma bonds are there. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the 6 hydrogens, that is 12 sigma. Yeah, 12 sigma.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. And there will be how many pi's? 3 pi bonds. Done, sir. Done. Okay, just give me a second, please. Okay. Now, now we are going to learn about hybridization. Okay, we are going to learn about hybridization. Before going on to the details of hybridization, let us start learning about how the bonds are formed and how the molecules are formed. So I will take a simple example of hydrogen molecule. Okay. So hydrogen molecule, and when it is attached with oxygen, it makes water molecule. So water has a formula of H2O. Now, what will be the structure of this particular H2O? Will it be like this, or will it be like this? What type of structure will be there? Now we get a bit of idea about the skeleton from the Lewis dot structure. So Lewis dot structure, it tells me that the molecule will be something like this. I hope all of you will agree with the Lewis dot structure, that this is going to be the Lewis dot structure. But this angle here, it is saying that it is going to be 180 degree, the bond angle, as you can see. Right. Now we are going to understand like whether this particular bond angle will be 180 degree or not 180 degree according to the valence shell electrons. So if I look at the water molecule, it has oxygen atom. What is the atomic number for oxygen, guys? What is the atomic number for oxygen? क्या हुआ, कोई आंसर नहीं करेगा क्या? 8, 1s2, 2s2, 2p. Iram, tell me, 2p how much? How many electrons will be there in 2p? 4. 2p4. Now, what is the valence shell here? The valence shell is, yes, Fahad, tell me, valence shell क्या है यहाँ पे? Fahad, what is the valence shell? 2. 2 is the valence shell. Okay. That means these are the electrons which will be taking part in the bond formation because these are the outermost electron. So if I draw the 2s, then you'll have 2 electrons in the s orbital, 1, 2, 3, and 4 electrons in the p orbital. This is 2s. We can say that maybe this is what? Px, this is py, and this is pz. Okay. Now here we can see that there are some unpaired electrons. There are 2 unpaired electrons, and let us see what are these unpaired electrons and which orbital they are present. So it is present in py and px. So we may argue that the bond formation between oxygen and hydrogen will be something like this. For hydrogen के लिए भी अगर हम draw करें यहाँ पे, so hydrogen is going to have what? 1s1, right? And the other hydrogen is also going to have 1s1. So the valence electron here, it is going to be the 1 electron in the s orbital. Okay, now generally they should have opposite spins when they are going to form a molecule. So
if I draw the Py and Pz, because here what Py and Pz, we can see that these are unpaired electrons. And if you remember the valence bond theory, the valence bond theory says that the bonds are formed by the overlapping of orbitals with opposite spins, right? Overlapping of the orbital. Now, this is one orbital, Py and Pz. So the Pz will be something like this. If I say that this is the Z axis, and this is going to be your Py. Okay. This is your Py. And this is your Pz. Now, the s orbital of hydrogen is going to be spherical, right? Circular. Circular in 2D, spherical in 3D. So it will form a bond like this. It will overlap the molecule. It will be a bit small because it is 1s. Similarly like this. Okay, so according to the valence bond theory, this type of molecule should be present. The molecule H2O should be something like this. Okay, that's fine. That means the central atom here, which is oxygen. Now here we'll be having the oxygen atom. Okay, here we have oxygen molecule, oxygen atom, and here we have hydrogen. Here we have hydrogen. Okay. Here we have hydrogen and hydrogen molecule. So oxygen. We have hydrogen here. And see, it is 90 degree. This is going to be Pz. This is going to be Py. Pz and Py will be having an angle of 90 degree. So what valence bond theory is saying, the valence bond theory is saying that the angle that we are going to have here is going to be 90 degree. Now I want you guys to Google the bond angle of H2O. Can you please Google? ठीक है, हम लोगों ने अभी एक theory देखा, like we have seen some theory. हाँ, correct Fahad. So valence bond theory is saying that it is 90 degree, but my experimental, अब हम Google कोई experiment मांग रहे हैं, experiment से हमको पता चल रहा है that it is going to be 104.5 degrees. Correct guys? ठीक है. Now there is a bit of conflict. According to theory, it is what? 90 degree. And my experiment is saying that it is 105. Now, no matter how elegant your theory, how simple it is to understand, if it is not matching the experimental values, then it is not a correct theory. Then it is not a correct theory. Okay. Hence, now we are going to write about hybridization. Just a second, guys. Today. Okay. Okay. Now, what is hybridization? Hybridization suggests that there will be mixing of orbitals. They are saying that the pure p orbital and this pure p orbital, they are not going to take part in the bond formation. Hybridization says that all of the valence shell orbitals, they are going to take part in the bond formation. Okay, so we will write first a few things, definitions and all about the hybridization. And then we are going to look
how it is going to explain this structures. Okay. So please write hybridization. Okay. Now hybridization, for a simple understanding, you will understand it as mixing of atomic orbitals of one atom. अलग अलग atoms के नहीं, ठीक है? So oxygen के यहाँ पे क्या हो रहे होंगे? The p orbitals will be mixing of atomic orbitals of one atom, only one atom. Okay. Now this is something that you will keep in your head when you are going to write the definition of hybridization. You will write, please write with me, process of intermixing of atomic orbitals of slightly different energy energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals which have equivalent energy, size, and shape. The new orbitals formed are called hybrid orbitals. For example, one s atomic orbital. Okay, we have one s atomic orbital and two p atomic orbitals. We have one s and two p. Mixing का मतलब क्या है यहाँ पे? Hybridize to form 3 sp2 hybrid orbitals. That means you'll have one s plus one p plus another p. All of these three will be of the same atom. They will mix together and they will form what? The new or hybrid orbital they will be forming is sp2, another sp2, and another sp2. Okay. So the name of orbital, how we are defining? If I have s and 2p, then it is sp2. And if I have 3 atomic orbitals, then I will get 3 hybrid orbitals also, as you can see. We have 3 atomic orbitals, and this is resulting in 3 hybrid orbitals. Okay. So for example, आप लोग बताइए, if you have one s and one p, then first of all tell me how many hybrid orbital will be formed? 2. And what will be the name of that hybrid orbital? What will be the name? SP. यहाँ पे कैसे? हाँ, just sp. Very good. And there will be another sp. Okay.
Similarly, if I have one S plus P and another P, then what will be that? The name and how many orbitals. इसी तरह आप लोग लिखिएगा, ठीक है? And then if you have, for example, let us say S plus P plus D, S plus P plus D, S plus P plus D plus D. इस लास्ट का हम लिख दे रहे हैं, there will be 5 orbitals, हम इसको 5 sp3 d2 hybrid orbitals will be formed, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है? इसको क्या लिख सकते थे आप? 2 sp orbitals. Write this down and send me on WhatsApp. Send the answers when you're done. हाँ, लास्ट में 6 होगा, सॉरी. Yes, 4 sp3, 4 sp3, 2 sp3d. That's correct. Very good. Okay, Iram. 4. Yeah, 5. Yeah, correct. Very good. Okay. So here we have 4. So it will be 4. The name of the hybrid orbital will be sp3. And here we have again 4. The name will be sp2, sp2d. And here we have 5. This will be sp3d.
Write this down. Then we'll write some characteristic of hybrid orbitals. All of you done? Yes or no? Please tell me. अब्दुल्ला आपने लिख लिया? फहद आपका हो गया? हाँ सर. Okay. Right, next, characteristics of hybrid orbital. Number one, number of hybrid orbitals formed is equal to number of atomic orbital taking part in hybridization. The hybrid orbital formed will be equivalent in energy shape and size. They will be equivalent in energy, shape and size, है ना? जैसे यहाँ पे you will see S is spherical, P is आपके पास क्या होगा? It will be dumbbell shape. This will be dumbbell, this P is dumbbell, this P will be, let us say, some this shape. This will be having some this kind of shape. Okay. But all the sp3d2 orbitals, they will be oriented in one of this. एक लोब ऐसे होगा और दूसरा लोब थोड़ा छोटा होगा. Okay, all of them will be hybridized like this. Okay, all the hybrid orbitals will be of this shape only, but they will differ in, I mean, all the sp3d2 ऐसे होगा, and all of them will be having the same energy. As you know, S has the lowest energy, then we have P, then the D, which is further away from the nucleus, it is having even higher energy. But in the case of the hybrid orbitals, all of them will be having same shape, size, and the energy will also be same because we have mixed them together. Okay, because we have mixed them together. Right, next one. The hybrid orbital are more effective in bond formation. Than the pure atomic orbital. Hybrid orbitals are arranged in such a way that the repulsion between them is minimum Okay, now this is the last thing, that is about the orientation. Now we have 5 different hybrid orbitals. How are we going to arrange them? Okay, like p orbitals, they are arranged in the different axes. The d orbital have some different orientation. The s is spherical. How are we going to arrange all of those 5 things? So if I have, like, for example, for sp3, for example, sp3d, those 5 hybrid orbitals, how they are going to arrange themselves. Similarly, sp3, how are they going to arrange themselves? We have sp orbitals, how are they going to arrange themselves, right? So all of these questions, we'll talk about this when we learn about the Vesper theory, जो इसके just बाद ही आने वाला. Okay. Now I will write the condition for hybridization, and then we are going to learn about the
Vesper theory. Okay, in that you will understand more effectively how the hybrid orbitals are going to arrange themselves. And both of these, the orientation of hybrid orbital and the valence shell electron pair repulsion theory, there they have electron pairs. Both of them are very similar. That is why I will explain them in one topic only. Right, next, conditions for hybridization. Number one, only valence shell orbitals take part in hybridization. Second, difference in energy of atomic orbital undergoing hybridization should be small. There should not be very huge difference in energy of the atomic orbitals. Right, the third point, promotion of electron is not a necessary condition. Fourth point, half-filled orbitals is not a necessary condition. Example, conditions है ये तो, these are conditions, Fahad. Yes, sir. Can you give an example where fully filled orbitals hybridize? NH3 का एग्जाम्पल है, वो पढ़ाएंगे तब ना, भी आएगा ना वो. NH3 का एग्जाम्पल है, NH3 है, वाटर है, both of these examples where we have fully filled orbitals जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं and they also participate in hybridization. Right here, first of all, only the central atom, it is only the atomic orbital of central atom takes part in hybridization. Next, only sigma bond are formed by hybrid orbitals. Last point, one of the lobes get enlarged after hybridization.
Okay. Now, even if you don't understand 1 or 2 points, just write this down, because we are going to make plenty of molecules from these hybridization, these concepts. And like with each and every, with one and every example, you're going to understand each and every point. Okay. So just have patience for a while. And once I'm going to make the molecules using hybridization concept and then the valence shell electron pair repulsion theory, then I will also point it out. See, this particular point is getting used here. This particular point is getting used here. Okay. Now, after this, there is a concept which is known as steric number. Okay, so this steric number, even though it is not explicitly there in your NCERT, but it is very important and it is very useful if you want to understand the concept of both the things, hybridization and the valence shell electron pair repulsion theory. Steric number of central atom. Now, as simple, it's very simple steric number. Steric number is equal to number of sigma bond plus number of lone pairs. Okay. Number of sigma bond plus number of lone pair. For example, if I talk about central atom, okay, only for central atom, you're not thinking anything about the surrounding atoms. Hydrogen, oxygen, hydrogen. This hydrogen has lone pair electron. ये कैसे बनाया हमने structure water का? Because we have done Lewis dot structure. Now, if you have done Lewis dot structure, then you should have an idea about the number of sigma bonds and number of lone pair electrons. Yes or no? All of you agree with this? Yes or no? Please tell me. We know Lewis dot structure, and from the Lewis dot structure, we can tell the number of sigma bonds and the number of lone pair electrons. So you will tell me for this first one, H2O. Then you will tell me for CH4. You will tell me for NH3. SF6. PCl5. BCl3. BeCl2. We'll send the answer like this. Sn is equal to the number of sigma bond here, it is for oxygen, all the central atoms. 2 sigma plus 2 lone pairs. 4. You use whatever you feel right. जो भी आपको आसान लगे. The problem with the formula of monovalent atom is that it is not, I don't find it very much useful in your case, because all of these atoms that we have taken is monovalent only. All of the surrounding atoms. It is better and it is very easy to identify the sigma bonds and the lone pair electrons. That is a generic formula for complex things also. But for simple cases, you can just add the number of sigma bond and the number of lone pair electrons.
Okay, I've got answer from Devangi. So for the first one, yeah, very good. That is correct. Second is correct. Third is also correct. Yeah, very good. Yes, very good, Devangi. Is anyone else sending me the answers? Okay, so steric number of this will be, there are 4 sigma bonds and 0 lone pair electrons. Here the steric number will be equal to, there are 3 sigma bonds plus 1 lone pair. This will be equal to, again, 4. For SF6, it is going to be 6 sigma bonds plus 0 lone pairs. Here Sn is equal to 5 sigma plus 0 lone pair. For BCl3, steric number will be equal to 3 sigma plus 0 lone pair electrons, 2 sigma plus
0 lone pair electrons. Okay, now write this down. Let me know if you're done. जल्दी लिखिए guys. Those who are done, they will write the topic. Valence shell electron pair. Repulsion theory. Now, what is this theory used for? This is used for prediction of shapes of molecule. Okay, it is going to be used for the prediction of shape of molecule. Now, valence shell electron pair theory, it has a few points, but again, you don't have to memorize those few points. Those all of the points that they are present in the valence shell electron pair repulsion theory, all of them are very logical. All of them are very logical. Okay. Now, आप लोग तो जवाब नहीं देते. Otherwise, it would have been very nice. The first point, it says that. What do you guys think? Tell me. I'm still trying, guys. I'm still trying. If still you are not answering, then I don't know. So tell me, guys, there are two types of electrons in an atom. You can have core electrons and there are valence electrons. There are core electrons and valence electron. What do you think is going to be used for the bond formation? Core electron, यानी कि जो आपके पास, for example, which are near to the nucleus, they are going to form bond, or the one which is outer side, the valence shell. कौन से आपके पास bond बनाने में काम आएंगे? Tell me, guys, what do you guys think? The valence or the core? Valence. That is the first point of valence and electron pair repulsion theory. That the valence electron are going to be that the valence electrons and the molecule, whatever shape it is going to have, all of them depends on the number of valence shell electrons. Okay, so valence electrons are important thing. The first point, it says about the valence shell electron. Okay, now the next is the next statement of valence shell electron pair repulsion theory. You can ask yourself a question like this: all the electrons that we have, all the electrons in the valence shell, all the pairs of electron, and as you have seen in all the orbitals also, we have pairs of electron. Okay, so all the pairs of electron, they are going to repel each other or attract each other. Tell me, guys. Electrons जो negatively charged होते हैं, all the electrons are going to repel each other or attract each other. Repel each other, right? Now you can say that the valence electron pair repulsion theory में जो line है, it says something like this: that the pairs of electron in the valence shell, that they are present in the valence shell, they repel each other. Why do they repel each other? Because they are negatively charged. Okay, negatively charged. Acha. Now, if they are repelling each other, then we can say now that two electron pairs, they are going to attain a maximum distance between them.
Yes or no? To have the least repulsion. If two electron pairs are near to each other, they will be having more repulsion. If they are far away, they will be having less repulsion. So what do you think? Where they will be situated? Far away or close together? Electron pairs. Right. So the electron pairs, since they repel each other, and obviously the result of repulsion will be what? They will be far away from each other. And since they are far, now they are what? They're far away. They have the maximum distance between them and the least repulsion. They will attain a position in which they are having maximum distance and the least repulsion. Maximum distance and least repulsion. Now, all the major points that we have now, those are completed for Vesper theory. First thing is that valence shell mein hona chahiye. Okay. Valence shell, the number of valence shell electrons, they are going to determine the shape of the molecule, not the core electrons. The valence shell electrons are important. Then those valence shell electrons, they repel each other. Why do they repel each other? Because they are negatively charged. Okay, fine. Now the result of that repulsion is that they are going to occupy space around the atom in such a way that they are having maximum distance between them to minimize the repulsion. And then the last thing that the valence shell electron pair repulsion theory it assumes is about the shape of the atom. So what do you guys think is the shape of the atom? Tell me. Kya khayal hai aapka? Like we have, you know, a few 3D shapes, right? You know, cylindrical is a 3D shape, cone is a 3D shape, cube is a 3D shape, right? Then you have cuboid, it is a 3D shape. Then we have sphere, which is a 3D shape. Out of all of these, what do you think will be the shape of atom? What will be the shape of atom? Sphere. Sphere, right? Sphere will be the shape of atom. Now, all of these things you have answered, and that means whatever the logic behind the valence electron pair repulsion theory, those points are, they are very straightforward. Now, all of these things you have already answered, and you will write all the points of valence electron pair repulsion theory from your notebook. Okay, not from your notebook, from your textbook in your notebook. Now, this was the last point of the valence electron pair repulsion theory. Now, there is another point in valence electron pair repulsion theory that is associated with multiple bonds. Now, when we are going to learn about multiple bonds, abhi tak jitne bhi hum logon ne cases liye sab mein sigma bonds ही है. So when we are going to learn about the multiple bonds, ये सारे sigma bond खत्म करने के बाद, then I will come back to the point of what is that valence electron pair repulsion theory trying to say about that multiple bond. Okay, now we have a sphere and the electrons are going to be placed far away. I will start with one point. एक आप please यहाँ पे एक लिख लीजिएगा एक चीज और last thing is going to be order of repulsion की अगर हम बात करें. If I talk about the order of repulsion, now the pairs of electron can be, there will be repulsion between two pairs of electron. Okay, we have one pair of electron like this, there will be another pair of electron like this. Both of these are going to repel each other. Now we have seen only two types of pairs of electron. Either they are going to be lone pair. Now the repulsion between lone pair and lone pair, that is going to be highest because lone pair electrons are not bonded. That means they are only controlled by one atom. If they are controlled by one atom, that means they have a kind of liberty to repel each other and they are going to take more spaces also. So lone pair and lone pair repulsion is the maximum. Then we have the lone pair and bond pair repulsion, and the bond pair repulsion is the least. Write this point, order of repulsion. Lone pair is the highest, lone pair bond pair is the next, and bond pair is the least. Now, right next. अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए what's the reason, how many atoms are controlling the lone pair? Tell me, Fahad, how many atoms are controlling lone pair? 1 or 2? 1. And bond pair? 2.
So what do you think, Okay. which will be controlled? है ना? Yes, sir. Okay. Now, if I have steric number of 1, for example, अगर आपसे कोई पूछे कि HCl का shape क्या है, so if you have only 2 atoms, then it is going to be linear shape. उसका कुछ और भी कोई और shape हो ही नहीं सकता है, right? Yes or no? Tell me. Like we cannot have any other shape of HCl. हाइड्रोजन होगा, एक बॉन्ड होगा क्लोरीन के साथ, सिर्फ यही। अब इसको ऐसे बना दीजिए आप, तब भी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ही है। तो लीनियर शेप ही होगा व्हेन यू आर हैविंग ओनली 2 मॉलिक्यूल्स, ओके। बट the case becomes a bit different when we have steric number 2. So please write the topic. Steric number equal to 2. Now in this we are going to take a case of now this hash sign, it is short for number of, okay। hash sign को नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म है उसका, ठीक है। सो नंबर ऑफ sigma bond is equal to 2 and the number of lone pair is equal to 0. We are taking this case. That means hybridization. First of all, hybridization for this case will be, we'll have one S and one P. That means there will be 2 sp orbitals. There will be 2 orbitals which will be sp. Okay? Right here, atomic orbitals in hybridization is going to be s plus p. Number of hybrid orbitals is equal to 2 sp hybrid orbital. ठीक है, that is also seen in this particular equation जो हमने लिखा है, s plus p is going to give you sp and another sp. We'll have one s orbital like this. This is a p orbital. And these are going to form this is one sp orbital. This is another sp orbital. Both of them, these hybrid orbitals, they kind of look like balloons. Yes or no? Tell me. Yes, sir. Right now, they are going to have the same kind of shape if you tie 2 balloons. If you are going to tie 2 balloons, 2 inflated balloons, then what is the shape going to be? I hope you can see that. The shape, imagine कीजिए एक बार, 2 balloon को आपने tie कर दिया एक दूसरे के साथ, right? These ends, you are going to tie these ends. Then they are going to occupy something like this, right? Yes or no? Please tell me. Correct? Yes, Something sir. like this, right? So this is going to be the structure. I will say that this is going to be the orientation of the hybrid orbitals, and they are going to orient themselves in 180 degree. The angle between both of these atomic orbital is going to be 180. So angle 180 degree. And please remember, this is the electronic geometry, which is going to be linear. So if I have a atom in the central atom and it is attached with 2b, then the b are going to be here and here. Now, what are the different types of molecules that can be formed with AB2?
Now please see, this B should have valency of 1. This B should also have, because it is making one bond, valency is equal to 1, right? Now this A, it is making 2 bond, that means its valency should be 2. Now from here, what you can make plenty of molecules. Okay, you can make plenty of molecules. For example, valency 1 में आपके पास क्या है? Fluorine है, chlorine है, bromine है, iodine है, hydrogen है. All of these are having valency 1. For valency 2, you can have beryllium, right? Beryllium is the most common because other elements are going to show more ionic property. Okay, so valency अगर आपके पास 2 है, that means we are mostly talking about which group? We are talking about the group second. All the group second element, they are going to be having valency 2, but all of them, they make ionic bonds. And if you remember the diagonal relationship and the anomalous behavior of the second period element, in that we say that beryllium has majority of the times it is having covalent character. Beryllium is the one that we are going to use, and any one of these you can use. And in general, देखिए आपका fluorine atom जो है ना, fluorine can make bond with anyone, almost anything. You can make CF4, you can make BF3, you can make BEF3. Okay, you can make PF5, you can make SF6. Even xenon, it makes elements with fluorine. वो आखिरी में पढ़ेंगे हम. Okay, so fluorine अगर आपको examples देने के लिए कहा जाएगा, then you will think of fluorine because उसका valency भी 1 है and it is very reactive. Right, next formation of इसी में है. Okay, so this is for AB2. Right here, formation of BEF2. For BEF2, first of all, we only have to deal with what? The central atom. That is why I will just write beryllium. Now beryllium, 1s2, 2s2, 2p0, 1s2, 2s2, and 2p0. The second period 2p will be there, even though it is unoccupied. Then first of all, we are going to write the ground state of the valence shell. The ground state of valence shell is like this. The s electron, the s orbital, it has 2 electrons. And the p is having 0. Now, it needs to make bond in order to have BEF2. So what happens? The first thing that happens is promotion of electron. We excite this molecule a bit, and this electron, it goes here. Now we have these things. Now, then the excited state. This is the ground state. This is the excited state. In excited state, we can show that we have the s orbital. So यहाँ पे p में मत लिखिएगा कुछ. Excited state में आपके पास the 2s is having 1 electron, p is having 1 electron. Then comes the hybrid orbital. Now in hybrid state, 1s and 1p, they are going to hybridize with each other, leading to formation of 2 orbitals with same energy. Both of them are having 1 electron each. This is also sp, this is also sp. Okay, then in fluorine, the p orbitals of fluorine, they bond with each other. So p are like this. एक fluorine का p है, ये दूसरे fluorine का p है. Both are having some oppositely spin of electron. And these make bond like this. Okay, they overlap like this. So we have beryllium atom with its 1 sp hybrid orbital like this, 1 sp hybrid orbital like this, that is oriented in 180 degrees. And then the fluorine atoms, ये fluorine का क्या है यहाँ पे? तो fluorine's p orbital is present. Okay, 1 electron of fluorine, 1 electron of beryllium, 1 electron of fluorine, 1 electron of beryllium.
For the structure, they will give you BEF2, and they are going to ask you about the structure of or shape or geometry, these things, and the angle. Now there are few things that I want to tell you which you have to remember. When they ask you about the electronic geometry, and when they say geometry, they generally mean electronic geometry. So whenever they ask geometry, look at hybrid orbitals, how they are oriented. So just look at hybrid orbitals. These hybrid orbitals are oriented as 180 degree in a linear shape. See, आपके पास यहाँ एक hybrid orbital है, यहाँ पे एक hybrid orbital. क्या बना रहा है आपका? एक line बना रहा है. That means geometry is going to be linear. Second is the shape. Now, for shape, you have to look at bonds. Now, if you look at bonds here, then you will make something like this: BE. There comes fluorine, and there comes fluorine. Here it is still the same. It is still linear. It is still linear. And what is the angle? It is 180 degree. But please remember, shape ke liye always look at bond. Sometimes geometry and shapes are not same always. Okay, they are not always same. So for electronic geometry, you have to look at the hybrid orbitals. They show where are the electrons. And you should know that there are bonding pairs and there are lone pair electrons. So lone pair electrons will be included in geometry. ठीक है? लेकिन जब shape देखेंगे तो they will only include the bonding pairs. So the cases in which you will be getting lone pair electrons, there the geometry and the shape are going to be different. Slowly, we will cover all those cases. But first write this BEF2, the formation of BEF2. So steric number 2. Done, sir. Done, everyone? Right, next. Steric number 3. What color are we using? Steric number 3. In this case, I will be using the example of AB3. Okay, AB3. Now for this hybridization, sp2. Okay, and how is sp2 made? S plus P is going to give you sp2 plus sp2 plus sp2. One s orbital, and we have two p orbitals. This is going to give you three sp2 orbitals. Okay. If you imagine again the balloon structure is going to look something like this.
Okay, the balloon structure is going to look something like this, in which you're going to have the angle between the hybrid orbitals is going to be 120 degree. Okay, and we can write it like this. B is here, B is here, and B is here. So the geometry is going to be trigonal planar structure. As you can see, the surrounding atoms are making a triangle. So it is going to be trigonal planar. Now, if you look at AV3, then all the B atoms, we can say what is the valency of? Valency of the surrounding atom B will be what? And what do you guys think is the valency of the central atom A? Tell me, what should be the valency of B? 1. B का 1 होगा. Very good. That means यहाँ पे आपके पास कौन-कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? ग्रुप 1 में आपके पास, सॉरी, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आएंगे, बट जनरली दे गिव electrons and they are more ionic in nature. So उसको छोड़िए. We'll have group 17 elements B में, and you can have hydrogens. And what is should be the valency of A? Valency of A should be 3. 3 valence electron होने चाहिए. तो 3 valence electron कहाँ पे होते हैं आपके पास? When you are in the group 13. When you are in the group 13. Now, so we can take example of, there are many examples that you can make. BCl3 is there. You can make BF3. You can make BH3. Okay. So write an example of BCl3, formation of BCl3. Now again, we'll start with the same things. We have the boron. Atomic number is 5. 1s2, 2s2, 2p1. The ground state is going to be one electron, 2 electron, and then 1 electron the p orbital. The excited state. Now we are going to excite 1 electron here because we need to make 3 bonds. If we need 3 bonds, then we need 3 unpaired electrons. So 1 electron here, another electron, another electron. Now all of these 3, because they are going to take part in the bond formation, they are going to be forming the hybrid orbital. The hybrid orbital will look something like this. One electron, one electron, one electron. All of these are what? All of these are sp2 hybrid orbitals. And there will be chlorine atoms, 3 chlorines. And all of these 3 chlorines, they are going to have the p orbital with opposite spin. And these are going to overlap with each other, forming the BCl3 molecule.
You can write the structure. Because the steric number is 3, hybridized. Here you are asking, here we have one S and 2 P's. No? Okay, sir. All of these will be sp2, and these are from chlorine. So here again, geometry, the electronic geometry is going to be again same thing, trigonal planar, and the shape is going to be trigonal planar. And also, like all the overlapping, it will be with the same sign. Positive will always overlap. When I talk about the bond angle, no, the bond angle will be this bond angle. Chlorine, chlorine, and chlorine. So this bond angle is 120 degree. Okay. Chlorine, boron, chlorine. The angle between chlorine, boron, and chlorine is 120 degree. अच्छा, वहाँ पे देखिए कुछ लोग इस तरह से सवाल करते हैं. If I am going to take these things, तो कुछ लोग आपसे ना स्कूल में पूछेंगे तो ये एंगल क्यों नहीं लेते, ये एंगल क्यों लेते हैं. ओके, तो आंसर इज दैट कौन सा एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Like these are electron pairs, all the bonds they have electrons, right? These bonds they have electron, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कितना नजदीक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू रिपल्शन, and that is why we take the smaller angle, not the larger one. So it is defined by 120 degree and not is called कितना हो जाएगा 120 and 360 minus 120 जितना भी होगा 240 yeah. So we take the smaller angle because for repulsion the smaller angle is more important for us. यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने तो इतना ही रखिए. स्टेरिक नंबर 4 से we will see on Thursday. Okay. Guys, एक सवाल है आप लोगों से. Do you have any class before my class on Tuesdays and Thursdays? देवांगी आप बताइए. Do you have any other class today? Sir, physics. अच्छा, आपकी फिजिक्स की क्लास होती है. Okay, fine. Just before my class you have physics class? Yes, sir. Okay, ठीक है. Okay then. Okay. So thank you guys. Thank you very much. We'll meet on Thursday and then we'll complete the steric number 4 and 5. Thursday I will be taking a bit smaller class because I will not be at home. And आपका एग्जाम कब है देवांगी? 13th को ना? No, sir, Thursday only. अच्छा, थर्सडे को ही है. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपका हुआ है, लेकिन what else are they asking in hybridization? आपके स्कूल के नोटबुक के मुताबिक कहाँ क्या है हाइब्रिडाइजेशन में? और till hybridization means I think they will be asking about the sp3s also, formation of ethane and ethane. Okay, before molecular orbital theory I think it will be
देवांगी आपने पढ़ा है अपने से कुछ? सर अभी नहीं। अभी नहीं पढ़ा है आपने? अच्छा, तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है उतना। देन क्या क्या ख्याल है आपका, कैसे तैयारी कीजिएगा? यस देवांगी। सर नोटबुक से रिवाइज कर लूंगी एक बार। हाँ, स्कूल वाले नोटबुक्स आप देखिएगा, ठीक है। और इफ यू गेट एनी क्वेश्चंस ना तो फिर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन ना अभी कर लेने चाहिए थे अभी तक तो। ओके फहद, यू हैव सेंट मी सब क्वेश्चन ना, अभी उनको यस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस यस। ओके फाइन देन। देवांगी एंड अब्दुल्ला, आई मीन आई थिंक इफ यू स्टे इट विल बी गुड देवांगी, क्योंकि इट्स आल्सो रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल। ओके ओके सर। ओके। सो ये आपके एग्जाम्पलर में है ना, आपने जो सवाल भेजा है, राइट? यस सर, पहला वाला 63। या फिर सारे एग्जाम्पलर के हैं? सारे ही तो शायद शायद हाँ। एक शायद आपका नहीं होगा एग्जाम्पलर का, वो शायद उसका लग रहा है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, लेट मी गेट द एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी, ओके, क्लास 11 का नहीं है सारा। जस्ट अ सेकंड। अच्छा एक हम आपको सवाल इसका दिखा ही देते हैं इसमें। आई थिंक वो डेंसिटी और मोलारिटी वाला सवाल ना हम लोगों ने किया है। सर मैं उसमें वो ट्राई कर रहा था जो आपने रिलेशन बताया था ना, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी का, 1000 डी समथिंग करके। डेंसिटी वाला ना, जी उससे आ नहीं रहा। उसमें नहीं नहीं आ जाएगा। आप उसमें ये देखिए कि वो फॉर्मूला किसके लिए था। वेट अ सेकंड, कंसंट्रेशन टर्म, स्टोइचियोमेट्री, दिस इज इक्वल टू वेट। यही सवाल है ना, देखिए तो। ये सर ये शायद एक्सपेंड। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर। हाँ हाँ यहाँ पे यही है मोलर बस। है, देखिए। नहीं 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 नहीं। देखिए यहाँ पे अच्छा क्या हाँ। है, ठीक है, वो डिफरेंस है। तो आप इस फॉर्मूले में जो हमने आपको फॉर्मूला दिया होगा ना, इट विल बी रिलेटेड टू मोलारिटी। नहीं नहीं आ रहा उसका। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, सवाल अलग है ना। लाइक नहीं हियर नहीं वी नहीं, हैव मैंने 3। मैंने उसमें वो यूज करा है, मोलैरिटी का, तो आंसर मैच नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, आप हमको भेजिए किस तरह आपने किया है। वो तो सुनना पड़ेगा। एक second। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ करा है वो तो। नहीं नहीं फिर आई मीन वो मिस्टेक ढूंढना फिर मुश्किल होगा ना, फॉर्मूला बताने से। जी मैं भेज देता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो। हाँ नहीं नहीं, हाँ आप भेज दीजिए जो भी आपने किया, ठीक है ना, उसको देख लेंगे। सर भेज दिया मैंने। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक सेकंड,
अब आपने क्या किया है 1000 into m नहीं आपने देखिए सही से अप्लाई किया है मोलालिटी विल बी इक्वल टू मोलालिटी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उधर असल में ये देखिए फॉर्मूला आप कैसे पता नहीं आप कैसे इसको लगा सकते हैं यहाँ पे एक सेकंड फॉर्मूला है आपके पास मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 times of the molarity whatever it is into 1000 times of density minus the molarity of the solution into its the molar mass of the solute, right? यस ठीक है अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है मोलारिटी निकालना है ना तो इस फॉर्मूला को पहले रीअरेंज कीजिए कैसे करिएगा m into 1000 d minus capital M times m and mb is equal to 1000 times of molarity आप यहाँ पे मतलब इसमें आप अरेंज कैसे कीजिएगा कि ये m is equal to आ जाए ये देखिए हो रहा है इससे हाउ विल यू अरेंज इट मैंने तो वैल्यूज डाल दी थी पहले ही। वैल्यूज डाल दी हम्म, वैल्यूज डाल दीजिए आप फिर भी आपके पास मतलब m आना चाहिए ना यहाँ पे 3 हो जाएगा ये 1000 इंटू डेंसिटी क्या है इसमें 1.11 ग्राम पर मिलीलीटर। हाँ ठीक है माइनस ये फिर भी कैपिटल M रहेगा है ना कैपिटल M तो नहीं जा रहा ना कहीं दिख रहा है आपको पता चला जाएगा ना बाद में। ठीक है चलिए उसके बाद इंटू मोलर मास इंटू यहाँ 40 तो ना गलती नहीं है मेरी 40 है 1000 उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे यू हैव डन 1.11 हो जाएगा ये ठीक है और ये 33 ये होगा ना 1.110 है 1.11 है जी। ठीक है थाउजेंड इसमें आपका क्या आंसर आ रहा है दिस विल बी इक्वल टू दिस कमिंग आउट टू बी हाउ मच आपके इसमें 3.3.78 3.7 what is the answer आंसर इज 4 point something 4 point something I mean मतलब like this the way that we have written this formula ना ये generally ऐसे मोलालिटी के लिए यूज नहीं होता है बिकॉज ट्राई कर रहे थे एक बार तो फिर बिकॉज मेरे पास एग्जैक्टली उसका भी है मेरे पास मोलारिटी का मोलारिटी इनटू डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 प्लस समथिंग। उससे भी आपका नहीं आ रहा क्या like you can get a नहीं formula उससे for molarity also उससे भी अच्छा नहीं this आ is in this is in NCERT right main book रहा। नहीं एग्जाम्पल exemplar which question tell me question of क्वेश्चन नंबर 32 32 oh sorry
सर आंसर 2.97 है, नॉट 4.2.97 आंसर है। इसको करने का मेरा तरीका तो ये रहेगा कि मोलारिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 3 मोलर, 3 मोलर का मतलब 3 मोल्स पर 3 moles per 1 kg of solvent. 3 moles per 1 kg of solvent, right? Okay. Now the density of 3 mole solution of NaOH is this much. Calculate the molarity of the solution. 3 moles per 1 kg of the solvent. And here we have the volume of solution. Okay. Density of solution. Second. चलिए ठीक है, 110 grams per ml. That means this will be equal to 1.11 kg per liter of solution. 1.11 kg per liter of solution. Okay. For 1 kg of solvent. Then we have volume of solution. Mass of solution is going to be equal to volume into density. ठीक है, volume into density. अच्छा देवांगी, you want to discuss? अच्छा फहद, we'll discuss this later. Okay. देवांगी, आप केमिकल बॉन्डिंग के कुछ सवाल है, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं फहद, उसके बाद फिर देवांगी चली जाएगी। तो ओके, जो आपने भेजे थे ना सवाल, ठीक है, बिकॉज आई थिंक देवांगी आपका ये नहीं आ रहा ना। सर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, अच्छा तो फिर रुकिए, है ना, इसको भी देख लीजिए सवाल को। कहाँ पे थे हम लोग? So mass of solution will be equal to volume into density. Okay, volume into density. फिर mass of solute कितना and रहा आपका mass of solvent 1120 आएगा, 1120 आएगा mass of solution complete ना, mass of solution 1120 grams. yes 1120 grams. ठीक है, that means वॉल्यूम आपने कितना लिया है? What is the volume that you have taken? वॉल्यूम तो निकाल लेना। ये आपने क्या लिया है फिर?
1120 क्या बोल रहे थे आप? सर ये मास है, किसका मास है? मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ तो यहाँ वॉल्यूम क्या लिया, वही तो पूछ रहे हैं। वॉल्यूम ही तो निकाल ले। तो मास ऑफ मास आ सोल्यूशन आपने कहाँ से लिया है? तो मास, क्योंकि 3 वो है मोलर, सो 3 मोलर मतलब 3 moles per 1000 grams. So 3 moles of NaOH का मास निकाला और 1000 grams तो 1000 grams। असल में 1000 ग्राम मतलब पानी लेके चल रहे हैं। क्योंकि 3 मोलर है ना, तो 3/1 kg। नहीं नहीं वो सही है आपका, लेकिन ये 100 ग्राम्स यानी कि, अच्छा 3 मोल्स पर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ से आपके पास 120 आया है, यहाँ से आपके पास 1000 आया है। अच्छा अच्छा ठीक। तो मास ऑफ सोल्यूशन आपने निकाला ये 1120। अच्छा, नाउ वी कैन गेट द मास ऑफ सोल्यूशन। हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, राइट? तो यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर तो हो जाएगा, वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पे है ना, मोलैरिटी है। मोलैरिटी आ जाएगी। पर फिर वो फॉर्मूला लगा के क्यों नहीं आ रहा? फॉर्मूला में देखिए, जब अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा तो हम लोगों ने निकाला था फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो हम लोग के नंबर ऑफ, ये जो m डालने का, ये जो m है आप बताइए, मोलारिटी इनटू द मोलर मास। ठीक है, मोलारिटी इनटू मोलर मास क्या आएगा अगर आप यूनिट्स के लिहाज से देखिए तो ग्राम्स पर मोल एंड इनटू मोलर मास क्या होता है, सॉरी दिस इज मोलर मास, और मोलारिटी हो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है आपका ग्राम्स, अगर यहाँ पे अगर हम मोलर मास क्या होता है ग्राम्स पर एमएल ना, ग्राम्स पर एम, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या डेंसिटी को लाने के लिए, अच्छा उसके बाद यहाँ पे मोलारिटी क्यों है, यहाँ पे जो मोलारिटी दैट इज ओनली ड्यू टू द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एक यूनिट यूनिट के हिसाब से अगर आप इसको देखें ना, 1000 इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई 1000 डी माइनस एम इंटू एम बी। यहाँ पे आपके पास ऊपर में होगा मोल्स पर लीटर और नीचे होगा आपके पास डेंसिटी, राइट, दैट इज ग्राम्स, ग्राम्स पर लीटर, राइट? सही है, हाँ सही है। कैन यू सी दैट, यस और नो, टेल मी। यस। तो जब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डालते हैं ना, जब हम लोग बोल लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग यहाँ पे, आप देखिए न्यूमरेटर में हम लोग क्या डाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं डाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, पूरी की पूरी मोलारिटी डाल रहे हैं। एंड वी डोंट राइट इन द टर्म्स ऑफ यूनिट, बिकॉज हम लोग को सिर्फ नंबर से मतलब है। अगर 2 मोलर है सोल्यूशन, देन वी जस्ट राइट 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, है ना, 2 मोल्स पर लीटर इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अगर हम लोग को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर से खेलना है तो इस वजह से। ओके, दैट इज वाई यहाँ पे आपके पास इवन दोनों इक्वेशन, अच्छा जो आपके पास इक्वेशन था इसका, टेल मी दिस इक्वेशन व्हाट इज दैट? 1000 molarity, molality into density, 1000 into molality into density बस, upon 1000 plus molality into molar mass. you're not getting answer from here. No. अच्छा ठीक है, इस इक्वेशन को हम देख लेंगे एक बार। लेट मी गेट अनदर क्वेश्चंस दैट यू आर हैविंग। क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पलर में
hybridization of PCl5 and SF6, right? Yes, sir. तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए PCl5 अभी निकाला हम लोगों ने, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ PCl5 विल अरेंज इटसेल्फ इन सच अ मैनर, फास्फोरस है आपके पास, अगर आप बैलून को भी अगर रखिएगा ना, तो ऑल द 5 balloons are going to orient themselves. 3 will be in one plane, 1 will be above, and the 1 will be in the below. Okay, so this is the arrangement. This is the arrangement. Okay. Now, this is in a complete plane. In one plane, all of these are present. Now, if you look here, there are two different types of bond. All of these which are in the one plane, these are known as equatorial bonds, and the one which is in above and below, this is known as axial bond. Now, what is the difference between them? If you look at this particular axial bond, this axial bond, it is in 90 degree, because अगर आपके पास ये plane है और यहाँ पे इस तरह से खड़ा है, ठीक है, it is something like this. Okay, so this is 90 degree, this is 90 degree, this is 90 degree, and this is 90 degree. All of the angles between the axial and equatorial is what? 90 degree. This is the smallest angle that you are having in 90 degree, ठीक है. And if you look at this particular equatorial bond, it is having 120 degree with each other. Can you see that, all of you? Yes or no, please tell me. All the equatorial bonds are 120 degree, and the axial one is having 390 degrees. Can you see that? Yes. ठीक है. अब इस वजह से बताइए कौन ज्यादा नजदीक है, 90 डिग्री वाले ज्यादा नजदीक है एक दूसरे से, या 120 डिग्री वाले ज्यादा नजदीक है? 9 समझा नहीं मैं, क्वेश्चन नहीं समझा. हम पूरे दो चीज को आपने रखा है 90 डिग्री, इस तरह से आपके पास ये दोनों ज्यादा नजदीक है एक दूसरे से, या फिर ये दोनों ज्यादा नजदीक? कौन ज्यादा नजदीक है? 90 वाले ज्यादा नजदीक है. देवांगी, आपको भी दिख रहा है 90 वाले ज्यादा नजदीक है? यस सर। राइट. अच्छा, यहाँ पे हम 120 नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिस इज 3D में है ना, तो ये आपका एक पीछे जा रहा है और एक इधर सामने आ रहा है, नजदीक आ रहा है, ठीक है. एक यहाँ पे आपके पास 2D में इस तरह से लग रहा है, लेकिन ये पीछे जा रहा है, एक सामने आ रहा है. ओके, सो ऑब्वियसली 90 डिग्री इज व्हाट, दे आर नियरर. अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर नियर होंगे, नजदीक होंगे, तो रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा? रिपल्शन विल बी ग्रेटर और स्मॉलर? ग्रेटर. मोर. इफ दे विल बी मोर रिपल्शन. अब इसी रिपल्शन को देखिए, एंगल से तो ये कुछ अपना चेंज नहीं कर सकते, राइट, रिपल्शन. तो ये क्या करते हैं, द एक्सियल बॉन्ड दे स्ट्रेच देमसेल्फ. दे स्ट्रेच देमसेल्व्स. क्यों स्ट्रेच करते हैं? क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई all of these are equatorial bonds and these are the axial bonds, and that is why the bond length of axial is greater than equatorial. Okay, due to the bond pair repulsion between bond pair repulsion of the axial bond is greater than that of equatorial bond. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ना, describe the hybridization. इसके लिए तो आप ना प्लीज, you can watch my previous years lectures, सिर्फ दोनों के लिए. The axial bonds are compared to whereas, ठीक है, PCl5 में आप लोगों को समझ में आ गया कि axial bond PCl5 में बड़ा क्यों होता है? इस वाला प्लीज टेल मी. Yes. राइट, बिकॉज 90 डिग्री है. अच्छा, अब SF6 में देखिए, इन SF6 व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू हैव सल्फर, ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर. अच्छा, आपको यहाँ पे भी वही लग रहा होगा, आपको यहाँ पे भी वही लग रहा होगा दैट अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, ये बताइए आप. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस फ्लोरीन एंड दिस फ्लोरीन? क्या लग रहा है? 90. हाँ, इनके बीच में भी 90 डिग्री है, ठीक है. जैसे हम लोग XY प्लेन बनाते हैं ना, उसी तरह से ये, ठीक है, उसको हम लोग इस तरह से बना दिया है. यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री है. एक यहाँ पे पीछे जा रहा है, दिस इज कमिंग फॉरवर्ड, यू कैन से दिस इज गोइंग बैकवर्ड. ओके, इनके बीच में भी 90 डिग्री है. नाउ ऑल ऑफ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री. कैन यू सी दैट? Yes. ठीक है. नाउ सिंस all
bonds are at 90 degree to each other, they face same repulsion. And if they're facing same repulsion, then they have same bond length also. And that is why SF6 में क्या होता है, whereas SF6 both axial bonds and equatorial bonds have same bond length. क्यों? Because they are facing equal repulsion. And in PCl5, the equatorial and the axial ones, they are not facing equal repulsion. सर इसमें SF6 में जी 6 की 6 फ्लोरीन जो है वो एक ही प्लेन में या फिर अलग प्लेन में? नहीं, मतलब ये आपके ना देखने पे ये होता है। अगर आपको लग रहा होगा ऐसा कि एक्सियल है और एक ऊपर और नीचे वाले अलग अलग हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली सिमेट्रिकल, कोई फर्क नहीं है। हम एक सेकंड, आई एम शोइंग यू वन फोटो। अच्छा समझ गया मैं, मतलब वो ठीक है, तो जो जैसे XYZ प्लेन होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह है यहाँ पे। ये आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे इस तरह से एंगल आया, ये पीछे जा रहा है, ये ऊपर आपका, ये नीचे आपका। ठीक है, तो दिस इज द कॉर्नर, यू कैन अज्यूम ये एक कॉर्नर है, एंड दिस इज द वॉल दैट इज अबव, दिस इज द वॉल, दिस इज बिलो। ये आपका, अगर आप किसी भी कोने में देखिएगा अपने रूम के ना, देन यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 देयर। ओके, इट इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल यहाँ पे। लेट मी show you the photo of SF6. 3, 4, 5, and 6. And then I have to equilibrate this. Can you see the structure? ठीक है, अब देखिए, हम इस वाले क्लोरीन को पकड़ रहे हैं और इसको हम टॉप में ले जा रहे हैं। इट इज स्टिल सेम, यस और नॉट प्लीज? जी अभी भी कोई डिफरेंस नहीं। इसको ये पकड़ के आप इसको नीचे वाले को पकड़ के आप इधर साइड में ले जाइए, इट इज स्टिल द सेम। ठीक है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, नथिंग इज डिफरेंट। नाउ इफ आई टेक अनदर एग्जांपल ऑफ PCl5, where is phosphorus, and then we need chlorines. ये बॉन्ड ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना, इक्विलिब्रेट करने की दिक्कत है बस। ओके, नाउ यू कैन कंप्लीटली सी, यहाँ पे आप ना कोई और चेंज कर नहीं सकते हैं। यू हैव वन that is your axial and this is axial, the three are equatorial. अगर हम इसको ऊपर लेके आए, देखिए weird हो गया ना स्ट्रक्चर, राइट? जी बिकॉज हमने ओरिएंटेशन कैसा कर दिया, इक्वेटोरियल को ऊपर कर दिया। ठीक है, नाउ सी दिस। लेकिन यही चीज जब हम SF6 पे कर रहे थे तो सारे के सारे बॉन्ड सेम थे, कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, राइट? सो हियर वी हैव अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग गोइंग ऑन। ओके, सो वी हैव द इक्वेटोरियल्स एंड वी हैव द एक्सियल बॉन्ड्स। लेट मी सी व्हाट इज द डिस्टेंस, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है। The bond angle here it is 2.074 angstrom. And the bond angle between these two will be it is not so different. It's not behaving correctly. Sure. Okay. Next question is, what is meant by the term average? Why is the difference of bond enthalpy in OH bond in ethanol? Why is there a difference in the bond enthalpy of OH bond in ethanol and in water? And then what question you have? Polarity of the molecule of the dipole moment primarily which of the following has. So you are asking about dipole moment. Yes, Fahad? यस Right?
ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक CO2 का स्ट्रक्चर, सो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट? So here this is delta negative because of more higher electronegativity. This is also delta negative because of higher electronegativity. Here it is delta positive. ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी जब पोलैरिटी यहाँ पे कैसे होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड देयर विल बी अनदर डाइपोल मोमेंट लाइक दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड यू कैन सी बोथ ऑफ दीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शन. Dipole moment is a vector quantity, that is why it will be 0. Second case is with HI. Now HI is going to have some dipole moment because this is delta negative and this is delta positive due to electronegativity. ठीक है, कुछ होगा यहाँ पे. Third is water. Now water has this type of structure. ठीक है, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको ये बनेगा, लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर. यहाँ पे we have lone pair electrons, that is why it is bent structure. Steric number 4 में आएगा ये, okay, because we have 2 bond pairs and 2 lone pairs. And here we are going to have like this because oxygen is delta negative, hydrogens are delta positive. Achha, if I compare hydrogen iodide and water, then here we can say that iodine is lesser electronegative, oxygen ज़्यादा electronegative है, that is why H2O का अभी तक ज़्यादा है. Then again we have sulfur dioxide. Sulfur dioxide में you will have sulfur, double bond oxygen and double bond oxygen. And then you will have the lone pairs like this. ठीक है, again ये भी आपका steric number 4 में आएगा. 1 sigma bond, 2 sigma bond, 2 sigma bonds, and then 2 lone pair electrons. Okay, so now what we are going to have, we are going to have here, अच्छा यहाँ पे कौन ज़्यादा electronegative है, oxygen is more electronegative, delta negative here, delta negative here, and delta positive will be here. Okay, तो देखिए इस तरह का होगा. अच्छा, whenever you have a vector quantity like this, अब इन दोनों का आप देखिए क्या लीजिएगा, component. So there will be a component like this from both of these, नीचे की तरफ जाता हो, and there will be a component like this. ये वाला component जो है आपका vertical वाला component, they will get cancelled. सिर्फ एक थोड़ा सा component जो बचेगा, that will be sorry, horizontal वाला cancel हो जाएगा, vertical वाला बच जाएगा. So again because it is a little bit of component and sulfur और oxygen के बीच में उतना ज़्यादा negative difference नहीं है जितना hydrogen और oxygen के बीच में, इस वजह से water is going to have the most dipole moment. तीनों चारों में समझ में आया फायदा आपको? जी जी सर, इसमें मतलब ये कंपोनेंट वाला नहीं समझा मैं. उसकी अच्छा. रिजल्टेंट होता है ना शायद वेक्टर्स का, कंपोनेंट थोड़ी होता है जितना मुझे. हाँ वो आप जानिए, ठीक है, जो भी है नाम आप ले लीजिए, रिजल्टेंट या नहीं कंपोनेंट. मतलब वो कंपोनेंट्स नहीं बनता ना, आई थिंक बस उसका रिजल्टेंट है. हाँ वो फिजिक्स है, ठीक है, हाँ रिजल्टेंट है या कंपोनेंट जो भी. आपको ये बात समझ में आ गई ना कि क्या हो रहा है? मतलब इससे जो ये है ना आपके पास लॉजिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर. हाँ, एंड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना इन दोनों के, अच्छा जब इस तरह से वेक्टर होता है देन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या गिरता है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट आर दीस कॉल्ड? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पता नहीं. नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे नहीं पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ लिया आप लोगों ने? वेक्टर पढ़ा है आपने जी. कल? जी तो जब जी बारिश ऐसी गिरती है तब हम लोग बनाते हैं ना, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है हर चीज का. अगर आप स्लैंटिंग डायरेक्शन में तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा होता है ना? जी तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट आर दीस थिंग्स कॉल्ड? पता है. कंपोनेंट ही बोलते हैं ना इसको शायद. देवांगी आपको पता है क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स? नहीं? हाँ ये कंपोनेंट होता है. कंपोनेंट्स ही बोलते हैं. तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं आप? नहीं मुझे लगा वो लाइंस को पूछ रहे हैं, मतलब एक लाइन को कहते हैं दूसरे को कहते हैं. नहीं हाँ, इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को कंपोनेंट्स ही कहते हैं ना. जी जी ठीक है ना. अब फिर उसके बाद देखिए ये आपके पास जो यहाँ पे एक वेक्टर था ना, ये ब्लू वाला, ठीक है, और एक ये ग्रीन वाला. एक ग्रीन वाले का यहीं पे पड़ेगा एंड देन ब्लू वाले का भी यहीं पे गिरेगा, एंड इन दोनों का जो क्या होगा इसके बाद आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट करेंगे ना. दोनों को ऐड करने के बाद क्या रिजल्टेंट बोलते हैं, राइट? जी. हाँ तो वही उसके बाद जो होगा वो दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर. पर सर हाइड्रोजन में भी तो होगा, ऑक्सीजन वाटर में भी तो यही होगा सर, उसमें भी तो रिजल्टेंट हाँ होगा. वहाँ वाटर में तो भी सेम चीज इस तरह से. तो ठीक इसमें है, ये वाला लॉजिक क्यों नहीं लग रहा कि क्या? अरे नहीं जो आपको, अरे हमने ये बताया डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे,
डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है ना, देखिए आप वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, देखिए जो फंडा है ना कि वाटर का और इन दोनों का लास्ट में कंपेयर करने के बाद दैट विल बी बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डायपोल मोमेंट इज कंप्लीटली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको जो डायरेक्शन है इट इज लाइक दिस। अच्छा जी, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट आप, अच्छा देवांगी ने भी कुछ सवाल भेजे हैं। ओके देवांगी, विल लुक एट दोस क्वेश्चंस आल्सो। देवांगी के पास सवाल है हाइब्रिडाइजेशन का, एक सवाल ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। इफ यू हैव फॉर एग्जांपल NO2 पॉजिटिव, देन यू हैव NO3 नेगेटिव, देन यू हैव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इन सब में भी आपके पास वही सेम रूल है, लाइक यू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सबका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। वंस यू हैव ड्रॉन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड द लोन पेयर्स। देवांगी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिएगा सबका। फिर करना क्या इसमें? फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। यस देवांगी टेल मी। सर इनमें तो लगा सकते हैं ना हाफ वाला जो। नहीं वो आप किसी में भी लगा सकते हैं, आई मीन वो किसी में भी लगा सकते हैं हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन एक तो वो फॉर्मूला भी काफी लंबा है एंड सीधा अगर आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाए उससे ना, इस वजह से हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बिकॉज आप अगर उस फॉर्मूले को देखें तो इट इज ओनली डीलिंग विद एटम्स, राइट। पर उसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता ना, टाइम बच जाता हाँ वही तो हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर, हम वही तो बोल रहे हैं आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाए दोनों का तो ज्यादा बेहतर, इस वजह से हम ये एक्सरसाइज करते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। है। अच्छा समझ रहे हैं आप बात, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो कि नहीं आना चाहिए, जी जी, हाँ सर। है ना। हाँ तो इसलिए हम बोले दैट विल बी अ प्री रिक्वायर्ड, तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की भी वहाँ पे रिवीजन होता रहेगा whenever you are having सर this आप एक का memorization। करके दिखा दो। हाँ हाँ श्योर, किसका करके बताएं, सर NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव, ठीक है। इसमें आप बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितना होता है देवांगी? सर sp2 होगा ना इसमें? 5। हाँ दिस विल बी 5, या करेक्ट 5, एंड ऑक्सीजन में 6 यस सर। एंड +1 बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। यस सर। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 18 और इधर 6 कितना हो गया 24। अब यहाँ पे आप क्या बना लीजिए स्केलेटन, 3 बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, राइट। अब you have got the skeleton, after you have made this skeleton we'll count the total valence electron is 24, how much is used, 3 to the 6 is used, how much is remaining Devangi? 18 is remaining, 18 is remaining, right। हाँ करेक्ट देवांगी, ये सुनो। यस सर। अब यहाँ पे oxygen happy, we have some more electrons left, this oxygen is also happy, we have some more electron left, we have some, no all of them are happy, all of the oxygen, and we have completed the valence electrons, yes or no, tell me। यस सर। okay अब यहाँ पे is nitrogen happy? Is nitrogen happy? नो सर। No, then we will, one of the oxygen is going to give it some electron, ठीक है। अब हमारे लिए लोन पेयर वगैरह ये सराउंडिंग एटम के जरूरी नहीं है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। अब बताइए यहाँ पे व्हाट डू वी हैव, सिग्मा बॉन्ड कितने हमारे पास 3 है, टेल मी सुनो। यस सर। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच 3, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 3 है, आज ही हम लोगों ने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन विल बी
sp2। ठीक है, सो देखिए अगर आपके पास 2 आ रहा है स्टेरिक नंबर देन इट विल बी sp, 3 आ रहा है तो इट विल बी sp2, 4 में जनरली sp3 है, और जो दूसरा केस है sp2d का वो हम बताएंगे। 5 में आपके पास क्या आ जाएगा sp3d, 6 में इट विल बी sp3d2। दिस इज स्टेरिक नंबर एंड दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर। ओके, सर और कुछ क्वेश्चन थे, जैसे सल्फर की कोवेलेंसी 6 होते हैं सर। सॉरी क्या चीज सल्फर की 6 होता है? कोवेलेंसी 6 होते हैं। हाँ 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 सल्फर की कोवेलेंसी जी, उसमें कोई स्ट्रक्चर ऐसे आ रहे थे, मैं देख रहा था जिनमें जैसे अगर कोवेलेंसी सल्फर मैक्सिमम ने 6 होती है वैसे। हाँ बताइए। जी मैक्सिमम 6, तो जैसे उसने 4 बॉन्ड बनाए किसी एलिमेंट के साथ, मुझे याद नहीं, मतलब 4 बॉन्ड बनाया, हाँ ये आपने कहाँ देखा? सर याद नहीं है, जैसे SO4 मान लेते हैं। एक एक एटम के साथ नहीं ना, SO4 आप बोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक। तो इसमें एक एक ऑक्सीजन के साथ एक एक है, लेकिन उसमें फिर उसमें बोलता कि गलत हो गए और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन को ये हो डबल बॉन्ड गए, दिया ताकि सल्फर 6 SO4 कर पाए, ऐसा SO4 2 कुछ। नेगेटिव होगा, SO4 2 नेगेटिव होगा। जो आपको देखिए, आपने थोड़ा सा क्लास मिस किया था, याद है आपको? एक दिन ठीक है। आप जो बोल रहे थे हम नमाज के लिए गए थे, आ रहे थे, कुछ था हाँ मैंने देख लिया था उसका वीडियो, देख लिया। तो वही तो था ना। वहां तो हमने वही समझाया कि आपको वहां पे बॉन्ड्स कैसे बनाने हैं। जब आपके पास एक नॉन मेटल हो और उसके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे आपके पास ये देखिए H2SO4 हो, चाहे वो आपके पास SO4 2 नेगेटिव हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सल्फर के साथ एक तो डबल बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास देखिए हाइड्रोजन से यहाँ पे जो है ना OH लग गया, और दूसरे के साथ भी OH लग गया। अब एक और आपके पास क्या ऑक्सीजन बन रहा है, उसके लिए डबल बॉन्ड हो, हम्म, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए आपके पास ये, जैसे अब यहाँ पे देखिए H3PO2 है यहाँ पे, है ना, H3PO2 है, तो फिर आपके पास फास्फोरस एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा ही होगा। नाउ you have how many hydrogens left? We have 3 hydrogens, तो एक OH आ ठीक। गया आपके साथ, अगर एक दूसरा OH आ गया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, और ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन बच गया, एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ H। पे, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। पर इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम जैसे सल्फर को हम्म, डबल बॉन्ड ओ नहीं दें तो गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हाँ, अच्छा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और आपका एक और सवाल है जो ना, इसमें वाइज हम ये बता दे रहे हैं, वाइज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH इन इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, दिस इज OH जो आपके पास इथेनॉल के पास है, CH2 एंड CH3, इसी तरह से है ना इथेनॉल का स्ट्रक्चर। हम्म, शायद जी अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन ना 10th क्लास में, कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? हम्म, पढ़ा, हाँ पढ़ा, मतलब पढ़ा है स्ट्रक्चर ना? नहीं सीखा था, बस बस फॉर्मूला सीखा। नहीं मतलब इस तरह से तो लिखना जाना होगा ना आप लोगों ने, जी 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 ये है ना, ये तो पता होगा आप लोग को, राइट? ओके, एंड देन व्हाट इट इज सेइंग, वी हैव अनदर वन व्हिच इज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों के बॉन्ड में आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो देर आर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, और ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल, जो OH बॉन्ड्स हैं, इसका कुछ एनर्जी होगा और इस OH बॉन्ड का कुछ एनर्जी होगा, और उन दोनों का एवरेज लिया जाता है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल की एक बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है, दैट इज गोइंग टू बी, अगर आप यहाँ पे देखिए एक OH बॉन्ड को तोड़िए, इट विल बी व्हाट, OH नेगेटिव आ जाएगा, करेक्ट, यस और नो?
जी यहाँ पे OH नेगेटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर से आप तोड़िए इस बॉन्ड को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और क्या देखिए, यहाँ पे कुछ एनर्जी जो लगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, बिकॉज ये हियर वी ऑलरेडी हैव अ नेगेटिव एटम, है ना। अब उसके प्रीवियस केस में आपके पास क्या था, इट वाज स्टेबल, स्टेबल न्यूट्रल था, उसके बाद आप न्यूट्रल से आप थोड़ा चार्ज स्पीसीज में जा रहे थे। So that is why the bond breaking here, it is going to be a bit different than the first bond that we have broken between hydrogen and oxygen, because ये molecule ही पूरा change हो चुका है, okay। And first breaking of bond, second breaking of bond, दोनों को add करके आप दो से divide कर दीजिए, this will get you the average bond enthalpy of the water molecule। लेकिन यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक ही बार बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एनर्जी था ना आपका, that will correspond to the bond breaking of ethanol molecule। जो वाटर में आप कितने बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं पहले, उसके बाद दूसरे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि पहले केस में वी आर ब्रेकिंग समथिंग फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, फ्रॉम अ मोर स्टेबल एटम। सेकंड में आप देखिए हमने क्या किया है, OH नेगेटिव है वहां से तोड़ा है, और OH नेगेटिव से तोड़ा तो उसको ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। जो आपके पास H2O था उससे बिल्कुल ही अलग है यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी दो ले रहा है वो अलग एनर्जी लेगा, और दोनों का एवरेज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द एवरेज एनर्जी ऑफ H2O molecule, average bond enthalpy of OH bond in H2O molecule। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक OH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक। ठीक है। 48 का जो बी पार्ट है उसमें नाइट्रेट आयन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करेगा ना। एक सेकंड, हम सवाल देखने दीजिए हमको। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बताइएगा। 48 बी 40% पार्ट। अच्छा, नाइट्रेट आयन, व्हाट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, क्या पूछ रहे हैं इसमें आप। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना। हाँ, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ना। जी एक बार बना दिया, थोड़ा गलत बना। हाँ, NO3 नेगेटिव का हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, आप क्लास में नहीं थे। नहीं बनाया, NO2 नेगेटिव को बनाया, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाना चाह रहे हैं या फिर सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दोनों ही बनेंगे ना, रेजोनेटिंग बनाने के लिए लुईस बनाना ही। ठीक है, तो ये आपके तो हो जाएगा इसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड जो होगा दैट विल बी हैविंग अ डेटिव बॉन्ड, ओके। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है वो, सर किसी में अगर भी हमें आपको। इसका अगर जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हम्म, तो उसमें अलग स्टेप्स होंगे या फिर सेम ही होगा, सेम ही तरीका। ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही है ना। मतलब सेम स्टेप्स यूज करने हैं ना कि पहले वो निकालने के लिए। रेजोनेंस के लिए, नहीं लुईस डॉट की लुईस डॉट के लिए। मैं बोल रहा हूँ वो स्टेप्स तो वो यूज होंगे ना, बॉन्ड अलग है तो अलग स्टेप्स हाँ, यूज नहीं होंगे ना सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, स्टेप्स वही यूज होंगे, स्टेप से नहीं आ रहा है। आ नहीं टोटल रहा वैलेंस था इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। गलत। अच्छा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना हो जाएगा। 5 plus 3 into 5+1 प्लस, अच्छा ये तो वही है, NO3 का भी तो बनाया था हमने, नहीं बनाया था क्या। ये तो अभी तो बनाया हमने NO3 का, NO3 नेगेटिव का। अच्छा ठीक। ठीक है ना। रेजोनेंस में बस आपको क्या करना है,
रेजोनेंस हमने अभी पढ़ाया नहीं, इसलिए उतना शायद नहीं है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। So Devangi, you have sent me some question. Let me see that. सर एक और विषय है मेरा हाँ एनसीईआरटी बताइए। का 4.26 एनसीईआरटी का सबसे 4.26 change in hybridization। यहाँ पे आपके पास है NH3 प्लस वी हैव BF3, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने इसका एक बार बनाया था क्लास में। नाइट्रोजन जो अपना डेटिव बॉन्ड बनाएगा बोरॉन के साथ, इस तरह से। अभी यहाँ पे देखिए अगर आप, तो इट इज हैविंग 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है, यानी कि 4, दिस विल बी sp3। नाइट्रोजन का क्या है यहाँ पे, sp3 है। बोरॉन के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, इट इज sp2। लेकिन यहाँ पे दिस इज आल्सो sp3, दिस इज आल्सो sp3, दैट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसको काउंट नहीं करेंगे? काउंट तो कर रहे हैं ना, 4 हो गए ना, 4 सिग्मा होगा यहाँ पे, अच्छा 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 यहाँ पे भी 4 ठीक सिग्मा हो गए ना, ठीक है ठीक ठीक जी। अच्छा, ionization of hydrogen is this much joule. Calculate the energy required to excite the electrons in an hydrogen atom from ground state to first excited state। I think ये सवाल कहीं पे होना चाहिए। देवांगी just a second। ionization energy, the ionization energy of hydrogen, which is joule per mole. Calculate the energy required to excite the electrons in an hydrogen atom from ground state to the first excited state। Actually, you need to have this। देखिए बात है इसमें, like what they are trying to give you and what they are trying to ask here। ionization energy उन्होंने दिया हुआ है, that means your initial is equal to first orbit and final is going to be infinity, ठीक है, final is going to be infinity। where I have given you guys for ionization energy, इस तरह का सवाल एक होगा कहीं पे। सर दिखा था अभी मुझे एन की वैल्यू 2 हो गई ना इसमें शायद या 1 सॉरी, एन की वैल्यू 2 होगी या फिर 1 नहीं नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी है ना, और हाइड्रोजन एटम में दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद वन ऑफ द ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ से भी निकल सकता है, यू कैन हैव दिस आल्सो। देखिए जनरल हम आपको बताते हैं, ये आपके पास है इस सर तरह से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 1.132 किलोजूल पर मोल, ठीक है। And calculate the energy required to excite the electron in a hydrogen atom from ground state to the first excited state। So here what you have to do, see, यहाँ पे आपको बेसिकली उन्होंने बोला है कि E आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल
it is equal to 1.312 into 10 to the power something भी है, चलिए 1.312 into 10 joule per mole. ठीक है, you have some value like this, and this is your ionization enthalpy. Ionization enthalpy का मतलब your electron is in the first orbit and it is going away towards what? It is going away towards infinity. यानी कि this ionization energy is in positive. This particular energy, ये जो En orbit है, यहाँ पे इसके पास कितनी एनर्जी होगी? सेम एनर्जी इन द नेगेटिव फॉर्म, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. आप उसको इतना ही एनर्जी दीजिए, वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से. ओके, सो हियर यू हैव in general I can say this much energy is associated, minus 1.312 joule per mole, it is associated into 10, जो भी है आपके पास constant, कुछ वहां पे प्रिंटिंग आपको ये लग रहा है. Okay, this much energy is associated with n is equal to 1. Okay, this much energy is associated n is equal to 1. अच्छा, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? En is equal to some constant divided by n square, the number of orbit, into z square, that is the atomic number, that is your atomic number. तो आपके पास E1 क्या हो जाएगा? minus 1.312 into 10 जो है आपके पास, because it is first orbit 1 square into z square. तो what they are trying to give you, they are trying to give you this constant. और ये कांस्टेंट मिलने के बाद आपको क्या निकालना है? E2. E2 will be equal to minus 1.312 upon second orbit है तो 4 हो जाएगा into z square, that will be equal to 1 only because it is hydrogen. Then what you need to do, you need to have the E2, you need to find the what is calculate the energy required to excite the electron ground state से hydrogen atom. तो आप यहाँ पे कर दीजिए E1 minus E2. That's it. Whatever the difference is between these two values, वो आपके पास क्या आ जाएगा? Ionization enthalpy. Let me do this for you. ये into 10 ही है देवांगी? Yes, sir. That means it is 13.12 joules. Correct? Yes, sir. Okay. So energy of the first orbit will be equal to minus 13.12 joules per mole. और En जो होता है that is minus 13.12 divided by n square into z. ठीक है, तो minus 13.12 हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है? आपको सवाल से ही मिल रहा है, ionization enthalpy से. क्यों? Because if you put here 1 ना, if you put here 1, then it will be still 13.12. ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो आपको मिल रहा है that is you are going to get from the ionization enthalpy. and आपको यहाँ पे क्या निकालना है? E2. This will be minus 13.12 divided by n square कितना हो जाएगा? Because we are in the second orbit, this will be equal to 4. Z will be still 1 because we are still in the hydrogen atom. Hydrogen has only 1 proton. Okay. And what you have to find? You are going from E1 to E2. Okay, so obviously what you have to do, you have to spend some energy. When you have to spend some energy, you just do final minus initial. That will be equal to minus 13.12 divided by 4 minus this energy, that will be equal to 13.12 जो आपका फर्स्ट के लिए. Calculate this and tell me what is the answer. So it will be plus Sorry, minus plus. the energy that you're talking about, no? Yes, sir. This energy minus that energy. Yeah, calculate this. But wait a second, then wait. Then I think this will be 13.2 and minus 13.12. I think it is going to be the difference between both of these things. हाँ, calculate कीजिए, सही calculate कीजिए.
you'll get the answer in positive. सर Yeah, tell me. सर आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सकती है क्या, या हमेशा पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव ही हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज एनर्जी देनी पड़ेगी हमेशा ना एटम को उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज इक्वल टू, मतलब अगर आप नेगेटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ले लीजिएगा तो दैट इज इक्वल टू E1 फर्स्ट ऑर्बिट का। सर 9.84। और आंसर देखिए आप, आपके पास अगर आंसर है तो। सर आंसर नहीं है। हाँ नहीं, वो सही है आंसर आपका, क्योंकि एक बात देखिए आप, अगर आप 1 से आप 2 में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रिक्वायर लेस एनर्जी देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उस हिसाब से देखिए तो योर आंसर इज फाइन। ओके सर। जनरली देखिए आपको इसके अलावा ना कुछ और भी दिया जा सकता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, एक तो सबसे पहली बात आयनाइजेशन एंथैल्पी, नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू E1, और दूसरी चीज En is equal to some constant divided by n square and z square into z square. They can give you anything in terms of electron volt per atom, they can give you something in joules per atom, or they can give you in kilojoule per atom or kilojoule per mole. ठीक है, इन तीनों में से किसी में दे सकते, लेकिन सबका फॉर्मेट सेम रहेगा, ये कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। लाइक द कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, the constant is different for joules per atom, and the constant is different for kilojoule per mole. Okay, but for z n square and the z square उन दोनों का प्लेस वही सेम। अच्छा, उन्होंने आपके पास एक और सवाल आपने बोला है, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ईच ऑफ द सेट्स। CF4 SF4 BF3 BCl3 CO2 SO2। क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, और दूसरा आपके पास है ऑल ऑफ दीज आर क्लोरीन्स, राइट। देखिए व्हेनेवर यू आर गोइंग टू हैव ऑल ऑफ द 4 एटम्स सेम, लेकिन ये याद रखिए यहाँ पे ये अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप नहीं पता, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड सेम, तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज सराउंडिंग एटम्स भी सेम है। ओके, तो यहाँ वाला आपका कैंसिल हो जाएगा इससे, एंड ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। बट यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, देन वी हैव ऑल द क्लोरीन एटम्स। तो ये सारे जो क्लोरीन एटम्स है ये नीचे की तरफ है मान लीजिए, so they will have a net dipole moment of downwards like this। यहाँ पे आपके पास CHCl3 का ज्यादा होगा। If I compare again CF4 में भी it will be 0 dipole moment because all of the 4 atoms are same। And then if I look at SF4, then SF4 में आपके पास ये ध्यान रखिएगा, सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 6 में से आपके पास जो 4 हैं वो क्या कर रहे हैं, 4 आर मेकिंग सम बॉन्ड्स, SF6 यानी कि 4 + 1 that will be 5, right? So it will be sp3d, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 5 हो गया, right? So you will be having this type of shape, you have fluorine here, you have fluorine here, fluorine here and fluorine here। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाला फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बट यू विल हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट लाइक दिस बिकॉज इट इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0, यहाँ पे SF4 का ज्यादा है। देन वी हैव BF3 एंड BCl3। BF3 एंड BCl3 में दोनों में से किसी का नहीं होगा, दोनों का सेम होगा। ओके, वेट 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 एक सेकेंड, हाँ दोनों का सेम होगा, दोनों का 0 होगा। BF3 ना, इफ आई लुक एट BF3 तो यहाँ पे देखिए ये ब्लू वाला एटम और ये ग्रीन वाला एटम, इसके कंपोनेंट्स अगर बनेंगे तो ग्रीन वाले का बनेगा एक इधर और एक इधर, ब्लू वाले का बनेगा आपके पास एक इधर और एक इधर, एंड देन वी हैव दिस एटम। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर वाला ये नीचे वाले कैंसिल कर देगा। सेम विल बी द केस ऑफ BCl3। तो BF3 एंड BCl3 में दोनों का सेम होगा। CO2 का हमने बताया था अभी
स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दैट इज इट इज गोइंग टू बी नेट जीरो। एंड SO2 में आपके पास बेंट स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 एंड देयर इज वन लोन पेयर या वन लोन पेयर। ओके, यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। सो बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 विल बी ग्रेटर। अच्छा, पर और कुछ है क्या आपका?